नमस्ते। ओम नमो भगवते श्री अरविंदाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। What a special, glorious day. Namaste and welcome everyone on this very special day as we celebrate or invoke. I don't know what's the right word. So we thought हम इस program को एक special satsang का नाम देते हैं. This webinar, this special satsang on this special day, having just celebrated Sri Aurobindo's birthday, India's Independence Day, and then today celebrating Krishna Janmashtami. So to mark this divine confluence of two very significant epoch-changing events in the history of Indian, or rather the history of entire human civilization, in the march of earth consciousness, we make this small, humble offering of love, our reverence, our gratitude to the two divine personalities, Sri Aurobindo and Sri Krishna. Before we start the program, as I was just thinking about our program today, I was reminded of one comment I had read that was made by one of the most devoted disciples of Sri Aurobindo, who was in his own right a highly realized soul, a highly realized yogi, great yogi, Sri T.V. Kapali Shastri ji. And he had mentioned this, in what context, I don't remember that, but this was sometime in 1949. He had made this comment, which I have sort of noted down in my notes. And this was in the context of what he said of Sri Krishna. He said, Sri Krishna's is a solitary instance in history where it was possible to retain constantly the God consciousness and yet participate fully, wholeheartedly in the affairs of the nation, social and political. And if I were to think of another name who would fit this description just absolutely perfectly, that will have to be Sri Aurobindo. So the two avatars, the avatar of the past and avatar of the future, they not only retained completely the God consciousness, but they were fully engaged with the other massive avataric work of leading the world, leading the consciousness of humanity to the next step in evolution. So hopefully during the next hour and a half or so, we will be exploring more of these kind of parallels and more of the divine personalities and the divine works of these two epoch-changing, avatars, the Sri Krishna and Sri Aurobindo. So with this small introductory comment, I welcome you all once again to this very special satsang. Webinar feels too technical a word to speak of this. And I request my colleague Vishwajita to take over and talk, help us with the flow of the program. So Vishwajita, all yours. Namaste, happy Janmashtami, happy Darshan Day, happy Independence Day. जैसे बेलूदी बोले कि आज का जो ये वेबिनार या फिर सत्संग, आप जो भी बोल सकते हैं, लेकिन आज का दिन एक ऐसा दिन है जो सब कुछ हमें जैसे मिल गया। श्री अरविंदो का बर्थडे के साथ प्रभु लॉर्ड श्री कृष्णा का जन्मदिन और हमारे इंडिया फ्रीडम का जो तीनों चीज एक साथ मिल गया है, तो इसको हम शुरुआत करना चाहते हैं। गोविंद अष्टकम जो शांता राजन जी अभी हमारे सामने पेश करेंगे, उसी से हम शुरू करेंगे। उस भजन और श्लोका के साथ हमारा ये प्रोग्राम को हम आगे लेके जाएंगे। तो मैं पहले शांता राजन को वेलकम करना चाहती हूँ। Shantha Rajan, apart from holding MPhil in economics, did a course on Sri Aurobindo studies with Sakar Pondicherry. As a musician,
is teaching Carnataki classical music and bhajans. She continues to work in mothers and the master sunlit path and their grace. Shantha Rajan ji, Namaste, everyone. please. There is some construction work going on behind me, so there Okay. is lot of different disturbances. I think by 5:30, by 5 the work will be over. Um, shall I sing afterwards? No, Is no, it no. okay? No, Yeah. you can start. Can you hear me properly? Yes, yes, yes. We can hear you. Hear you. Okay, I will try. Just Shantama, just if you can open your video, that would be great, if Yeah. possible. Yeah. Yes. We will try. I mean, mother should help us not to give the unnecessary sounds. I think she will filter it. Yeah, it's fine. We'll see. Instead of, just a sec. Today I am combining Govindashtakam and one Tarangini of Sri Narayana Tirtha, because Govindashtakam is too big, it won't fit into 4 minutes. So I'll just sing the first stanza of Govindashtakam and then continue with the bhajan. I thought it will be within 5 minutes. Satyam Jnanamanantam Nityamanakasham Paramakasham Satyam Jnanamanantam Nityamanakasham Paramakasham Goshthaprangana Rinkanalolamanayasam Paramayasam Maya kalpita nanakara manakaram manakaram bhuvanakaram Shmamanatham Anat Pranamatha Govindam Paramanandam Pranamata Govindam Govindamiha Gopikananda Kandam Sanandam
अवलोकयामो मुकुन्दं गोविन्दमिह गोपिकानन्द कन्दं सानन्दम् अवलोकयामो मुकुन्दं गोविन्द गोपिका गणनायन कुमुद पूर्णेन्दु गोपिका गणनायन कुमुद पूर्णेन्दु गोपाल कुल तिलक अखिल जनबन्धु श्रीपतिम् अनिन्द्य हरे चन्दन सुगन्धिं श्रीपतिम् अनिन्द्य हरे चन्दन सुगन्धिं श्रेयो विधायि करुणारस सिन्धुं गोविन्दमिह गोपिकानन्दकन्दं सानन्दम् अवलोकयामो मुकुन्दं गोविन्द संगीत रसरसिक सरस सल्लाभम् संगीत रसरसिक सरस सल्लाभम् सरल मुरली गलित साधु संतापम् संगीत रसरसिक सरस सल्लाभम् सरल मुरली गलित साधु संतापम् संगीत रसरसिक सरस सल्लाभम् सरल मुरली गलित साधु संतापम् शृंगार रसपूर श्री मदन गोपम् शृंगार रसपूर श्री मदन गोपम् श्रितजनानन्दम् अखिलानन्द रूपम् गोविन्द 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 सत्यं ज्ञानम् अनन्तं परमाकाशं प्रणमत गोविन्दम् नमस्ते। थैंक यू शांता दीदी। आपने ना जैसे कहते हैं एक रसा रस, हाँ, एक बहुत सी सुंदर एम्बियंस क्रिएट हो गया क्रिएट हो गया पूरे है। सत्संग के लिए। थैंक यू, थैंक यू। On Mother's Day, that's all. यस। अच्छा, चरण सिंह जी ट्राइंग टू कनेक्ट बट ही इज फेसिंग No, I think he's here. internet problem. Okay. He's here. Now I don't see you actually. Yes. I am teaching. Namaskaram. Okay. Namaste Charan ji. Namaste Beloo ji. Sorry for the delay. No. वही मुझे लगा आपके वहां पे कहीं बरसात का तो
रंग अभी भी नहीं है, ठीक है। जी जी जी, सुबह प्रॉब्लम थी, अभी सही है मौसम। चलिए चलिए, और फिर से एक बार सबका वेलकम। बिहार से भी सोसाइटी से जुड़े हैं और सब जगह से जुड़े हैं। आई कैन सी असित जी फ्रॉम जम्मू रांची है। से आलोक तुलसियान जी भी हैं, बिहार से विनोद नमस्ते। मालविया जी हैं, ये नमस्ते बड़े साधक हैं। जी सभी जी उनको प्रणाम। जी। तो सबका फिर से एक बार स्वागत है। और चलिए विश्वजीता आगे प्रोग्राम को आगे लेकर बढ़ाते चलते हैं। Yes. चरण सिंह भी आ गए हैं, तो अभी मैं नेक्स्ट चरण जी को बुलाना चाहूंगी। Dr. Charan Singh Kedarkhandi is a poet, author, and well-known speaker in the area of Sri Aurobindo studies. He lives in Jyotirmठ, Himalayas, and is devoted to the mother. तो प्लीज चरण सिंह जी, आप अपना आज जो आपका टॉपिक है श्री अरविंदो की दृष्टि में नया भारत, आपका आज टॉपिक है, तो प्लीज हमें कुछ बताइए उसके ऊपर। थैंक यू विश्वजीता, एक बार फिर से आप सबको मेरा प्रणाम। और जो मुझे टॉपिक मिला है बेलू जी की तरफ से, श्री अरविंद की दृष्टि में नया भारत, वो बहुत रेलिवेंट टॉपिक है आने वाले दशकों तक, तब तक जब तक नया भारत वास्तव में नया नहीं हो जाता, जब तक विकसित भारत वास्तव में आंतरिक भाव से भी विकसित नहीं हो जाता, जब तक भारत भवानी भारत नहीं हो जाता, भवानी भारती नहीं हो जाता, और जब तक भारत भारत शक्ति नहीं हो जाता, जो श्री अरविंद ने भारत की कल्पना की थी, इंडिया इज भारत शक्ति। तो ये बहुत ज्यादा प्रासंगिक टॉपिक है। और मेरी यह भी मान्यता है कि भारत को श्री अरविंद के इस भारत को जब हमारा भारत हासिल करेगा, तो आंतरिक और बाहरी मोर्चे पर उसकी बहुत सारी समस्याएं अपने आप दूर हो जाएंगी। कहीं ना कहीं हम लगभग 8 दशकों की स्वाधीनता के बाद भी उस आंतरिक स्वराज की तलाश कर रहे हैं, उसको फिर से अपने व्यक्तिगत और राष्ट्रीय जीवन में हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है, जिसकी पूर्ण सिद्धि राष्ट्रीय जीवन में अभी तक होनी बाकी है। उदाहरण के लिए माताजी और श्री अरविंद दोनों की बिल्कुल स्पष्ट धारणा है कि संस्कृत भारत की राष्ट्रभाषा हो। द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया शुड बी संस्कृत, क्योंकि संस्कृत में ही भारत अभिव्यक्त हुआ है, संस्कृत में ही भारत की आत्मा अभिव्यक्त हुई है। संस्कृत को जाने बिना भारत को नहीं जाना जा सकता, और संस्कृत जब तक इस देश का चरित्र नहीं बन जाता, बाकी भाषाएं इस देश का हुनर हो सकती हैं, हमारा कौशल हो सकती है। संस्कृत हमारा चारित्रिक विकास है। द नॉलेज ऑफ संस्कृत इज अवर कैरेक्टर डेवलपमेंट, दैट इज मस्ट। तो केवल एक उदाहरण मैंने आपको दिया कि श्री अरविंद और मां दोनों चाहते थे कि भारत संस्कृत में अभिव्यक्त हुआ है, भवानी भारती संस्कृत में उतरी हैं, तो उसकी भी राष्ट्रीय जीवन में सिद्धि होनी बाकी है। उतनी स्वीकार्यता, उतनी विश्वव्यापकता, उतनी गंभीरता से उसे पढ़ा समझा नहीं गया है। और जब तक हमारा खास तौर से युवा भारत संस्कृत के संस्कारों से, संस्कृत की गहराई से, संस्कृत के माधुर्य से, संस्कृत के उल्लास से अछूता रहेगा, तब तक उसके जीवन में एक सुपरफ्लुइटी चलती रहेगी, तब तक वो तलछट पर ही गोते लगाता रहेगा, गहराई में नहीं डूब पाएगा। श्री अरविंद को भारत से बहुत प्रेम था। अपनी एक बहुत अच्छी सूक्ति में बेलू जी वो कहते हैं कि अवर कंट्री इज गॉड द मदर, स्पीक नॉट इविल ऑफ हर, इफ दाउ कैंस्ट डू इट विद लव एंड टेंडरनेस। आज हम बात बात में अपने देश की बड़ी कई बार राजनीतिक असहमति के बाद, कई बार व्यक्तिगत रूप से किसी नेता अभिनेता से असहमति के कारण, किसी विचारधारा से असहमति के कारण कई बार भारत की भी बहुत कटुतापूर्ण आलोचना करते हैं। ये भारत के राजनीतिक परिदृश्य में अक्सर दिखता है। कई बार
किसी व्यक्ति और दल का विरोध, देश का विरोध की सीमा तक उतर आता है। लेकिन श्री अरविंद कह रहे हैं भारत क्योंकि वो एक शक्ति है, वो एक जीवंत सत्ता है, वो भूमि का टुकड़ा नहीं है, वो कोई मन की कल्पना नहीं है, वो कोई मुहावरा नहीं है। तो हम शक्ति की, अगर शक्ति से हमें असहमत भी होना पड़े, शक्ति से हमें नाराज भी होना पड़े, नाखुश भी होना पड़े, तो ये इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए जैसे हम अपनी मां से थोड़ी देर के लिए झूठ मूठ नाराज होते हैं, असहमत होते हैं। लेकिन हम मां के प्रति कभी बहुत सख्त नहीं हो जाते। उसकी बुराई मत करो अगर तुम ऐसा प्रेम और नाजुकता से न कर सको, क्योंकि हमारा देश भारत ईश्वर रूप में वो शक्ति है। अवर कंट्री इज गॉड द मदर, वो साक्षात ईश्वरीय देवता है, वो साक्षात शक्ति का शरीर है। Even if you feel bitter towards her, even if you feel disagree towards her, towards any manifestation of her, please speak with love and tenderness whenever you are going to indulge yourself in her criticism. तो यही वाक्य बड़ा प्रोफाउंड है, कैसा हमारा रिश्ता भारत से होना चाहिए और कैसे वो नया भारत का बीज इससे निकल के आएगा। हम सब जानते हैं कि जो अपनी धर्म पत्नी मृणालिनी देवी को जो पत्र श्री अरविंद ने लिखा, जो बाद में अलीपुर बम कांड के बाद उजागर हुआ, उसमें भी, हालांकि वो बिल्कुल प्राइवेट पत्र था, लेकिन उसमें भी उनका भारत बोध निकल के आता है, जो 3 पागलपन की बात वो करते हैं। और श्री अरविंद ने इस बात को पागलपन क्यों कहा? क्योंकि वो ये तीनों बातें उस समय बहुत बहुत अप्राकृतिक सी महसूस होती थी। हम इसको ऐसे समझे कि 1907-8 में स्वराज की बात करना बहुत बड़ी बात थी। इट वॉज वेरी अननेचुरल, क्योंकि केवल 100-200 नहीं, 1000 साल की गुलामी ने भारत को पौरुषहीन कर दिया था। मुझे श्री अरविंद की एक उक्ति याद आती है, वन डे ऑफ स्लेवरी रॉब्स ए मैन ऑफ हाफ हिज मैनहुड। गुलामी का एक दिन पुरुष से उसका आधा पौरुष छीन लेता है। तो जिस मुल्क ने, जिस देश ने 1000 साल तक गुलामी की अंधेरी काली रात देखी हो, उसका पौरुष कितना बचा होगा, इस बात को समझना मुश्किल नहीं है। तो इसलिए मतलब लोग व्यापक समाज इसको बहुत अजीब सी बात समझेगा, इसलिए उन्होंने कहा मेरे 3 पागलपन है। और एक पागलपन को इसीलिए उन्होंने भारत के संदर्भ से जोड़ा कि दूसरे लोग इसको केवल मिट्टी, पहाड़, मैदान, हिमालय समझते हैं, लेकिन मैं भारत की ओर ऐसे देखता हूं जैसे एक बच्चा अपनी मां की ओर देखता है। ये बात श्री अरविंद के, अगेन इट शोज द डीप बॉन्ड बिटवीन हिम एंड भवानी भारती। अब बहुत सारे लक्ष्यों के लिए जिसके लिए श्री अरविंद लड़े, जो स्वप्न उन्होंने देखे, उनकी योगिक त्रिकाल दृष्टि ने तो साफ साफ देखा। मेरे ख्याल से पुराणी जी से उन्होंने लगभग 3 दशक पहले बता दिया था कि भारत की पूर्ण स्वाधीनता होगी। ऐसे समय में जब बहुत सारे लोग ये कहते थे कि पूर्ण स्वाधीनता की बात तो केवल पागल ही कर सकते हैं, ऐसे स्टेटमेंट कि आजादी, पूर्ण आजादी का स्वप्न देखने वाले लोग पागल, जेल से छूटे हुए लोग हैं, पागल खानों से छूटे हुए लोग हैं, इट इज सिंपली नॉट पॉसिबल। उस जमाने में श्री अरविंद ने कहा इस बात को। आज जब हम लोग पॉलिटिकली फ्री हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो नया भारत जिसका निर्माण होना है, श्री अरविंद के लोक आलोक में, उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा से, उनकी दृष्टि से, उनकी योगी व योगमय चेतना से जिस नए भारत का निर्माण होना है, उसके लिए बहुत कुछ है नए भारत के पास। हमारी प्रशासन सत्ता के पास, हमारी राज सत्ता के पास, हमारे व्यापारियों के पास, हमारे समाज शास्त्रियों के पास, हमारे शिक्षा शास्त्रियों के पास बहुत कुछ ऐसा है जो श्री अरविंद उनको दे सकते हैं, जो वो श्री अरविंद से ले सकते हैं और नए भारत के निर्माण में अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं। सबसे पहली बात मैं जो चाहूंगा नए भारत का, श्री अरविंद की दृष्टि में जो नया भारत बनेगा, क्योंकि बेलू जी बहुत सारा कंफ्यूजन इसमें है। कुछ लोग विश्व गुरु के नारे को भी केवल एक पॉलिटिकल नारा मात्र समझते हैं, जबकि दैट इज नॉट ओनली ए पॉलिटिकल स्लोगन, दैट्स अ रियलिटी। लेकिन वो कैसे सिद्ध होगी? पहले विश्व का सच्चा शिष्य बनना सीखना होगा।
किस देश से हम कैसे बेहतर ले सकते हैं, क्या बेहतर ले सकते हैं, जो हमारे वेदों में है कि आनो भद्रः कृतवः, लेट नोबल थॉट्स कम फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस। तो पहले दुनिया से जहां जहां अच्छा है। कल मैं एक और टॉक में था, मैंने उनसे कहा कि जापान ने 2 परमाणु बम झेलने के बाद भी केवल 20 साल के अंतराल में 1964 में अपने आप को इतना काबिल बना लिया था आर्थिक रूप से कि वो ओलंपिक को ऑर्गेनाइज कर सका। और हम आजादी, हम 8 दशक बाद भी अभी इस स्थिति में लगभग नहीं है, या हम आशंकित हैं कि हम इतनी बड़ी प्रतिस्पर्धा आयोजित कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो केवल विश्व गुरु का कई लोग जो राजनीतिक नारे के तौर पर इसको उछालते हैं। या दूसरा आयाम विकसित भारत। विकसित भारत की दृष्टि को भी मैं मानता हूं कि एक भारतीय दृष्टिकोण से विकसित और अविकसित की परिभाषाएं निर्धारित करनी होंगी। क्योंकि जो अगर हम केवल पश्चिम के मानदंडों से अपने आप को विकसित की तरफ ले जाएंगे, तो वहां भले ही बाहरी तौर पर बहुत सारी समृद्धि है, सुख है, साफ सुथरी सड़कें हैं, बड़े बड़ी अट्टालिकाएं हैं, बहुत सारा व्यक्तिगत धन है, पैसा है, लेकिन जीवन का अंतिम ध्येय और संपूर्ण मानवता का जो ध्येय है, कलेक्टिव ग्रोथ और कलेक्टिव फुलफिलमेंट का जो ड्रीम है, वो इसके लिए ये तो पर्याप्त नहीं है। क्या सामान्य पारिवारिक सुख संबंधों की प्रगाढ़ता, परिवार, दोस्ती, मित्रता, इस सब का अर्थ, और जो भावनात्मक अपनापन, इन सब का भी तो एक विकसित समाज में मूल्य होता है। और हमारे पड़ोस में 10 लाख की जनसंख्या वाला एक भूटान सा प्यारा सा देश है, वहां कोई बाहरी तौर पर उतनी बड़ी समृद्धि नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि वो दुनिया के सबसे खुश रहने वाले देशों में से एक है आज की तारीख में। ऐसे दुनिया में बहुत सारे देश हैं जिनकी कोई नेशनल आर्मीज नहीं है। क्या वो विकसित का एक द्योतक माना जाए? तो बहुत सारी, हमको विकसित भारत के ड्रीम को भी we have to carry forward this mission, this dream with an Indian perspective, not according to Western yardsticks. और उसमें श्री अरविंद की भूमिका बहुत जरूरी हो जाती। In his letter to America, in his message to America, he clearly, categorically said कि भारत को टेम्पटिंग डायरेक्शन की तरफ नहीं जाना है। ये श्री अरविंद के थॉट हैं ऑटोबायोग्राफिकल नोट से। There are deeper issues for India herself, since by following certain tempting directions, she may conceivably become a nation like many others, evolving an opulent industry and commerce, a powerful organization of social and political life, an immense military strength, practicing power politics with a high degree of success, guarding and extending jealously her gains and her interests, dominating even a large part of the world, but in this apparently magnificent progression, forfeiting its swadharma, losing her soul. हमको ये भी देखना है कि जो नया भारत बनेगा, उसको अपनी स्वधर्म और स्वभाव को खोके नहीं बनना है नया। और उसी में आगे वो कहते हैं कि एक ऐसा समय जब दुनिया भारत की तरफ देख रही है, भारत की स्पिरिचुअलिटी की तरफ देख रही है, अगर भारत जो है इसी स्पिरिचुअलिटी से आंखें मोड़ लेगा, दूसरी दिशा में देख लेगा, तो ये अच्छा नहीं होगा। तो योग एंड स्पिरिचुअलिटी आर द 2 बिल्डिंग ब्लॉक्स on which the edifice of new India shall be erected. अगर हम इस कोर आइडियल से भटकते हैं, तो हम बहुत बड़ी आर्थिक शक्ति बन सकते हैं, मिलिट्री पावर बन सकते हैं, ऑथोरिटेरियन स्टेट बन सकते हैं, लेकिन उस प्रक्रिया में हम वो नहीं बनेंगे जो श्री अरविंद का भारत था, या वो जो प्राचीन भारत था, वो जो महान आदर्शों वाला भारत था, वो हम नहीं बनेंगे। एक मौलिक शर्त क्या है? नए भारत के लिए जरूरी है, जो श्री अरविंद ने इशारा किया था द आइडियल ऑफ कर्मयोगी ऐसे में, कि पुराने भारत को बेहतर समझा जाए और अपना आंतरिक स्वराज खोजा जाए, आंतरिक स्वराज को फिर से पाया जाए, जो आज भी मिसिंग है, जो आज भी बहुत सारे हमारे राष्ट्रीय जीवन में नहीं है। जो उन्होंने वो ऐसे लिखा और उसमें साफ साफ कहा कि स्पिरिचुअलिटी यू आर एवरीथिंग, मटेरियली यू आर नथिंग। फिर उन्होंने कहा कि हम सबको, और ये बात बिल्कुल आज भी 112-15 साल बाद भी बिल्कुल ऐसी लगती है जैसे कल जैसी ताजी है, कि पहले सच्चे भारतीय बनो। और बेलू जी, मैंने कल एक उसमें कहा था कि सिर्फ इसलिए हम भारतीय नहीं हैं कि हम भारत में हैं,
हमारे भारतीय होने का एक पैमाना ये होना चाहिए कि हमारे भीतर कितना भारत है, हमारे भीतर भारत की खुशबू कितनी है, ये भी होना चाहिए एक मानदंड भारतीय होने का। और यहीं पर वो बात स्पष्ट आ जाती है जब श्री अरविंद कहते हैं कि आर्य विचार को, आर्य चरित्र को, आर्य जीवन को, आर्य अनुशासन को फिर से हासिल करो, वेदांत, गीता और उपनिषद को फिर से हासिल करो। और उनको केवल इमोशन और इंटेलेक्ट में नहीं लेना है, क्योंकि इमोशनल और इंटेलेक्चुअल बदलाव होते रहते हैं। अभी ऐसा माहौल है, हम सब लोग इमोशनली चार्ज हो जाते हैं थोड़ा सा सुन करके, या इंटेलेक्चुअली थोड़ा सा धारणाएं बना करके, अपनी बौद्धिक प्रतिभा को बढ़ा करके किसी विचार विशेष के बारे में, लेकिन जैसे ही दूसरी अपोजिट माहौल मिलता है हम उसको खो देते हैं। उन्होंने कहा इनको जीवन में अपनाओ, वेदांत, गीता और उपनिषद को जीवन में अपनाओ। और फिर उन्होंने कहा कि ये जो आंतरिक स्वराज है भारत का, तब भारत के लिए जीवन और मृत्यु किसी का भय नहीं होगा। डिफिकल्टी एंड इम्पॉसिबिलिटी शैल वेनिश फ्रॉम योर वोकेबुलरीज, ऐसा करके वो जो भाव देना चाहते थे भारत को। तो ये सब अभी आया नहीं है। यकीनन हमको राजनीतिक स्वाधीनता मिली है, लेकिन हमको पूर्ण आंतरिक स्वराज जो हमने खोया था, जिसकी वजह से हजारों साल की गुलामी इस भारत की आत्मा ने झेली, उसको अभी हम पूरा नहीं पा सके हैं। और यहां पर श्री अरविंद रेलिवेंट बन जाते हैं। मैं ये मानता हूं, जो श्री अरविंद ने अपने भाई बारिंद्र घोष को भी लेटर में लिखा कि भारत में थॉट फोबिया कायम है, भारत में विचार शक्ति का उस तरह से अनुसंधान नहीं होता जैसे होना चाहिए। और मैं चाहता हूं कि नए भारत के निर्माण में जो श्री अरविंद ने सुझाव दिया है ऑन ओरिजिनल थिंकिंग नामक अपने उस ऐसे में, उसको भी जरूर हर जगह नया भारत उसको भी पढ़े। श्री अरविंद की दृष्टि में हम नया भारत को गढ़ पाएंगे अगर हम ऑन ओरिजिनल थिंकिंग को भी पढ़ेंगे। और जो सजेशन है कि जिस तरह से उन्होंने सोचा है कि मतलब अपने भारत के अस्तित्व को सोचने की क्षमता से जोड़ा है। द फर्स्ट नेसेसिटी वो उसको कहते हैं, इफ इंडिया इज टू सर्वाइव एंड डू हर अपॉइंटेड टास्क इन द वर्ल्ड, इज दैट द यूथ ऑफ इंडिया शुड लर्न टू थिंक। और फिर वो ब्यूटीफुली उसको आगे बढ़ाते हैं, दे शुड थिंक ऑन all subjects independently, fruitfully, going to the heart of things। उसमें कोई प्रेजुडिस ना हो, उसमें कोई प्रीजजमेंट ना हो, उसमें कोई सोफिज्म ना हो, उसमें कोई इंटरेस्ट ना हो, कोई अपॉर्चुनिज्म ना हो। ऐसा हम सोच सके अगर, दैट इज ओरिजिनल थिंकिंग। अब आजकल आप बड़े से बड़े बुद्धिजीवियों का भी जो चिंतन देखते हैं, उसमें कहीं ना कहीं कुछ कालिक रहती है, कोई झुकाव, कोई इंटरेस्ट, कोई इन्फ्लुएंस, कोई इंटरेस्ट, कोई अपॉर्चुनिज्म। और तब जाकर के लोग एक मामूली सा 2 पेज एक लाइन का कमेंट भी लोग इंडिपेंडेंटली नहीं लिख पाते, उसमें भी कुछ ना कुछ छिपा हुआ रहता है। तो ये कितना जरूरी है स्वतंत्र चिंतन करना। ये इसलिए श्री अरविंद ने कहा कि सत्य को नहीं छिपाया जा सकता, हम सत्य को नहीं छिपा सकते। तो जितना हम सत्य दृष्टि के साथ चिंतन करेंगे, उतना हमारी बने रहने की गुंजाइश ज्यादा रहेगी, एक व्यक्ति के तौर पर भी और एक राष्ट्र के तौर पर भी। और इसी ऐसे में वो आगे कहते हैं कि भारत कभी भारत होने से नहीं रुकेगा अगर भारत के लोग अपने लिए सोचे। लेकिन अगर वो सोचें कि अमेरिका वेस्ट उनके लिए, उस समय तो यूरोप ज्यादा प्रभावशाली था, कि यूरोप उनके लिए सोचेगा, तो फिर डेंजर है कि हम केवल और केवल उनकी एक बुरी कॉपी बन करके रह जाएंगे। तो ये कितनी बड़ी लाइट है आज के युवाओं के लिए, भारत के लिए। और एक और बात मैं जोड़ना चाहूंगा। बेलू जी, मुझे कितना टाइम है, हाउ मच टाइम आई एम गिवन? विश्वजीता, आई थिंक आप 5-10 मिनट और ले लीजिए। और 5 मिनट के अंदर आप खत्म करना। ठीक है, ठीक है। एक जो श्री अरविंद ने जो विदाई भाषण दिया, वो विदाई सलाह थी, इनफैक्ट एडवाइस के नाम से, जो उन्होंने 23 अगस्त 1907 में अपने ही रोपे हुए जो बीज बंगाल नेशनल कॉलेज के बच्चों के बीच कहा था। तो केवल 2.5 पेज का टेक्स्ट है, लेकिन उस पर पूरी एक पीएचडी हो सकती है और उस पर बहुत कुछ उससे निकल के आता है। उसमें न्यू इंडिया वर्ड भी उसमें है कि न्यू इंडिया कैसे बनेगा। और उसी में वो लाइनें भी हैं जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बहुत फेवरेट लाइनें थी कि मैं अब उनको, वो ये कह रहे हैं जब मैं वापस आऊं, इसका मतलब ये था कि एक खतरा था कि उनको डिपोर्ट किया जाएगा। उस समय उनको डिपोर्ट नहीं किया गया, लेकिन उन्होंने बोला अपनी तरफ से
कि जब मैं वापस लौटूं तो मैं तुम में से कुछ को महान बनते हुए देखना चाहता हूं, लेकिन इसलिए महान नहीं कि तुम उससे अहंकार से भर जाओ, बल्कि इसलिए कि तुम मां भारती को अपनी महानता से महान बना सको। मैं तुम में से कुछ को अमीर बनते हुए भी देखना चाहता हूं, लेकिन इसलिए अमीर नहीं कि तुम स्वार्थ पूर्ति में और उसमें आ जाओ, अहंकार से भर जाओ, बल्कि तुम्हारी अमीरी से मां भारती अमीर हो सके और फिर एक बार अतीत की तरफ, फिर एक बार दुनिया उसकी तरफ देखे, जब वो सिर खड़ा रहने के साथ पूरी दुनिया को विजडम देती थी, लाइट देती थी, दुनिया भर में प्रकाश स्तंभ बनता था भारत, वो बन सके। इसको आज के राष्ट्रीय जीवन में आप जब देखते हैं तो आप पाते हैं कि हम अमीर हो रहे हैं व्यक्तिगत रूप से, लेकिन भवानी भारती को दरिद्र करके। हम ये कुछ ऐसे ही है। अगर राष्ट्र जो है शक्ति का शरीर है, जो श्री अरविंद की दृष्टि है, तो ये कुछ ऐसे ही है जैसे मां के शरीर पर जख्म करना और तब जाकर के आनंद पाना। आज हमारे राजनीतिक वर्ग को देखिए, आज हमारी नौकरशाही को देखिए, आज हमारे सामाजिक संस्थाओं को देखिए, आज हमारे सरकारी अधिकारियों को देखिए। जीवन का कोई फील्ड ऐसा नहीं है जहां ये गिरावट ना आई हो। राष्ट्र हमारी प्रतिभा से राष्ट्र बढ़े, हमारी अमीरी से राष्ट्र अमीर हो, हमारे विद्या बुद्धि ज्ञान एजुकेशन से राष्ट्र ज्यादा उन्नत हो, ये सोचे खत्म हो गई। आज हमने राष्ट्र को एक स्प्रिंग बोर्ड की तरह यूज करना शुरू किया है कि बस हम उछाल ले लें यहां से, बाकी हमें कोई मतलब नहीं कि राष्ट्र की क्या दशा दुस्ता रहती। तो ये आइडियल जब नेशनल लाइफ में जब तक नहीं आएगा कि मुझे इसलिए बड़ा बनना है ताकि मां भारती बड़ी हो सके, मुझे इसलिए संपन्न बनना है ताकि मैं मां भारती को संपन्न कर सकूं। कुछ ऐसे ही जैसे हम जब व्यक्तिगत रूप से समृद्धि करते हैं तो हमारा घर समृद्ध होता है। जब हम व्यक्तिगत रूप से अच्छा संपन्नता हासिल करते हैं तो हमारे परिवारजनों में वो संपन्नता दिखती है। कुछ ऐसे ही राष्ट्र में भी दिखना चाहिए। जब हमारा उन्नति हो, हमारा विकास हो, तो हमारा राष्ट्र, उस राष्ट्र के जीवन में वो विकास दिखाई दे। और अगेन फिर जो है बार बार श्री अरविंद का उनका तो भारत बोध जो है, भारत का जो चिंतन है, वो कभी खत्म नहीं हुआ है। चाहे वो आप दुर्गा स्त्रोत में देखिए, वहां भारत है, उनके पत्रों में भारत है, उनके स्पीचेज में भारत है, इंक्लूडिंग उत्तरपाड़ा स्पीच, उनकी सलाहों में भारत है, उनके मैसेजेस में भारत है, उनके थॉट्स एंड अफोरिज्म्स में भारत है। इवन उन्होंने जब आर्य प्रकाशित किया तो एक पूरा बड़ा ग्रंथ जो रेनेसांस इन इंडिया लिखा, उसमें भी केवल और केवल भारत है। तो श्री अरविंद इतना प्यार अपनी मातृभूमि से करते थे, इतनी प्रगाढ़ उनका रिश्ता भारत से था, उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। द रेनेसांस ऑन इंडिया के पेज नंबर 38 पर कुछ लाइनें हैं जिसमें श्री अरविंद कहते हैं कि इंडिया कैन बेस्ट डेवलप हरसेल्फ ओनली बाय बिकमिंग हरसेल्फ। और ये भी, इसमें भी नए भारत के निर्माण में इसके लिए भी बहुत सारी आज के कर्ता धर्ताओं के लिए बड़ी लाइट इस सेंटेंस में है, इस वाक्य में है, इंडिया कैन बेस्ट डेवलप हरसेल्फ एंड सर्व ह्यूमैनिटी। और मानवता की सेवा भी वो बेस्ट तभी कर सकता है जब वो अपने आप को बन जाए, जब वो स्वयं वो बन जाए जो उसे बनना है। एंड फॉलोइंग द लॉ ऑफ हर ओन नेचर, उसका जो स्वभाव और स्वधर्म है उसको फॉलो करके वो अपना श्रेष्ठ कर सकता है। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि कोई दूसरी जगह से कुछ सीखने के लिए बात आए, कोई नई लाइट आए तो उसको अस्वीकार कर देना है। इस तरह का एटीट्यूड श्री अरविंद कहते हैं कि अगर कोई ऐसा सोचता है तो इस तरह का एटीट्यूड गलत है, ये अनस्पिरिचुअल है, क्योंकि सच्ची आध्यात्मिकता, ट्रू स्पिरिचुअलिटी रिजेक्ट्स नो न्यू लाइट। सच्ची आध्यात्मिकता किसी भी नए प्रकाश का अस्वीकरण नहीं करती है, उसका स्वागत करती है। उन्होंने फिर आगे जोड़ा है, हमें सिर्फ करना यह है कि जो बाहर से स्वीकार करना है उसको अपने आत्मा के सत्य के साथ एडजस्ट करते हुए अपने में समाना है। जो बाहर से लाना है उसको अपने स्वभाव और स्वधर्म के हिसाब से प्रयोग करना सीखना है, न कि उसको हुबहू ऐसे ही स्वीकार कर लेना है। और इसी में आगे बेलू जी श्री अरविंद लिखते हैं कि कई लोग ये आरोप लगाते हैं कि धर्म ने भारत का बड़ा अहित किया, बड़ा विनाश किया, लेकिन श्री अरविंद एक तरह से टिप्पणी कहते हैं कि काश भारत वास्तव में धार्मिक होता तो इस तरह की पतन और गुलामी नहीं होती। हम बहुत अधार्मिक बने, हम पशु बने, हम स्वार्थी बने,
इसलिए भारत का पतन हुआ, इसलिए भारत गुलामी की रात्रि में गया। सच्चा धार्मिक अगर भाव भारत में होता तो ये तमिश्रा की रात्रि, गुलामी की रात्रि, इसकी नौबत ही नहीं आती। तो जैसे वो मानस में कहते हैं कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, श्री अरविंद और उनका भारत के साथ जो संबंध है उसकी ये सच्चाई है। आपको सबसे फंडामेंटल एस्पेक्ट एक श्री अरविंद के व्यक्तित्व का, उनके संदेश का जो मिलता है वो डेफिनेटली उनका भारत बोध है। तो इसी टिप्पणी के साथ मैं अपनी बात को संपन्न करता हूं और हम लोग बाकी श्रोताओं को भी सुनेंगे। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंट हियरिंग। थैंक यू चरण जी। बहुत ही सादर प्रणाम चरण जी को। मैं जस्ट इतना कहूंगी चरण जी कि आपने सच्ची हरि अनंत हरि कथा अनंता बिल्कुल सही, बिल्कुल सटीक बात कही है। मेरी जस्ट पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है, अगर कुछ भी कमेंट्स या क्वेश्चंस हैं या तो आप चैट विंडो में डाल दीजिए। एट द एंड ऑफ ऑल द टॉक्स, बिफोर वी कंक्लूड विद अवर लास्ट म्यूजिकल ऑफरिंग, हम डिस्कशन का थोड़ा टाइम, कुछ प्रश्नोत्तर रख सकते हैं। सो आप चैट में डाल दीजिए या फिर अपने पास नोट करके रखिए। विल हैव सम डिस्कशन टाइम एट द एंड। यस, थैंक यू सो मच चरण जी। थैंक यू चरण जी। आप मतलब सिर्फ ये नहीं मैं बोल सकती कि बहुत अच्छा बोले हैं, बहुत सही बात बोले हैं। पर्सनली मैं ये फील कर रही हूँ कि बहुत सही बात आप बोले हैं। मेरे तरह और भी लोग यहाँ पर है जो आपको कमेंट सब कुछ करेंगे, लेकिन हम सुनेंगे, वो सब भी हम धीरे धीरे सुनेंगे। अभी मैं नेक्स्ट बेलू दी को बुलाना चाहूंगी। डॉक्टर बेलू मेहरा serves as Director of BhāratShakti, an institute of Sri Aurobindo Society, dedicated to studies in areas related to Indian culture. A former professor at an American university for almost 2 decades now, she has devoted herself to Sri Aurobindo studies as a student, researcher, writer, educator, program designer, and editor. आज बेलूदी हमें श्री अरविंदो एंड श्री कृष्णा फ्रॉम प्रेसिडेंसी जेल टू पौंडीचेरी, इसके ऊपर कुछ सिर्फ जानकारी नहीं, आपको पूरा बताना पड़ेगा। लेट्स सी, प्लीज देखें। वेलकम बेलूदी। थैंक यू विश्वजीता। मैं वहीं से शुरू करूंगी जहां से चरण जी ने जी छोड़े हैं, तो हाँ, फिर आगे जाएंगे आप। राइट लेकिन मैं अपनी बात इंग्लिश में रखूंगी क्योंकि मैं ज्यादा कंफर्टेबल उसमें फील करती हूँ। हरि अनंत हरि कथा अनंता इज परफेक्ट, क्योंकि कहाँ से शुरू करें, कहाँ से कहाँ पे ये लेके जाएं। सो मैंने अपने आप को जस्ट लिमिट करने के लिए ये टाइटल, सब टाइटल दिया, फ्रॉम प्रेसिडेंसी जेल टू पौंडीचेरी, एंड आई वांट टू फोकस ऑन 2 or 3 पॉइंट्स ओनली, बट at the same time I want to just elaborate on some of those points, just so that a little bit bigger picture comes through for us. So let me start with my own visit to Presidency Jail on 26th January of this year, a few months back. So I had this great blessing to spend a few minutes in that sacred space that is Sri Aurobindo's cell at Presidency Jail in Calcutta, as it was called at that time. It is that cell which Sri Aurobindo says became an ashram for him, where he had some of his most transformative realizations. This is the place, this is that little tiny cell where Sri Krishna made him realize the truth of Sanatan Dharma. And these are Sri Aurobindo's own words. And he also spoke about how it was Sri Krishna who gave him the Bhagavad Gita so that he was able to realize and practice the sadhana of the Gita. And if we were to closely look at some of his writings that he does after coming out of the prison in Karma Yogin and Dharma, we can see this very clearly, the shift in the spirit and intention with which he sort of plunges into this work of awakening the nation.
Now, if prior to the Alipur jail or Presidency jail, that whole arrest experience, if through Bande Mataram and Yugantar, Sri Aurobindo was waking up the Indians to this necessity of पूर्ण स्वराज, complete freedom, जैसे अभी चरण जी ने बात कही, जिस समय पे लोगों ने इमेजिन भी नहीं किया था कि ऐसी बात भी रखी जा सकती है. And Sri Aurobindo, through his writings, was awakening millions to, this real need for पूर्ण स्वराज, complete independence. Later on, through Karma Yogin and Dharma, he was awakening the nation to what is it that the nation will do with that freedom. So he was writing about, he was sort of awakening the Indian mind, the Indian consciousness to the kind of future nation India must become if she were to live out the true destiny, and if she had to take her true place in the committee of nations as a leader of humanity, as a guru of the world, to what kind of nationhood India should rise up to. That was the kind of spirit and intention we see in his writings post these experiences at the prison ashram. It was in that same prison cell where we know this from his own accounts that he spoke about in his famous Uttarpara speech on May 30th, 1909. In that cell, Sri Aurobindo called out to the divine. He asked this question to divine, why is this happening to me and why now? When I thought I was doing the divine's work of fighting for India's independence. And as he says, he kept waiting for 2 days. Some sort of a darkness came over me, he said. He struggled to make sense of this turn of events. And then on 3rd day, the voice within, the divine voice within, the Krishna within Sri Aurobindo brought him to that light and pointed out that this changed circumstance, this turn of events was necessary because now the time had come for when this revolutionary Aurobindo Ghosh was to be prepared, and he had to prepare himself for a new work. This would be work that will transform him to Sri Aurobindo, and the work which was absolutely essential if India had to live out to her true, complete, full potential, which was to lead the world, lead the humanity towards the next step in evolution of consciousness. And the same voice tells him, and who is going to prepare Sri Aurobindo to do that work? It would be Sri Krishna himself. So when in Uttarpara speech, Sri Aurobindo recounts these experiences, he says several things, and I want to point our attention to 2 essential lessons, 2 essential realizations that he has in this process of preparation by the Yogi Yogeshwar Sri Krishna himself. The first lesson, he says, is this, and I'm going to quote from Sri Aurobindo directly. He says, in this seclusion, the earliest realization, the first lesson came to me. I remembered then that a month or more before my arrest, a call had come to me to put aside all activity, to go into seclusion and to look into myself, so that I might enter into deep communion with him. I was weak and could not accept the call. My work was very dear to me, and in the pride of my heart, I thought unless I was there, it would suffer or even fail and cease. Therefore, I would not leave it. This is Sri Aurobindo saying about his own, what was going on, say, a month or 2 before his arrest. And he continued. In the prison, now he's talking about what happened in the prison. It seemed to me that he spoke to me. He is the Krishna. He spoke to me again and said, the bonds you had not strength to break, I have broken for you. Because it is not my will, nor was it ever my intention that should continue. I have another thing for you to do, and it is for that I have brought you here. To teach you what you could not learn for yourself and to train you for my work.
Sri Aurobindo continues, then he placed the Gita in my hands. His strength entered into me and I was able to do the sadhana of the Gita. I was not only to understand intellectually, but to realize what Sri Krishna demanded of Arjuna and what he demands of those who aspire to do his work. To be free from repulsion and desire, to do work for him without the demand for fruit, to renounce self-will and become a passive and faithful instrument in his hands, to have an equal heart for high and low, friend and opponent, success and failure, yet not to do his work negligently. I realized what the Hindu religion meant. Unquote. I can't say how many times I have read this Uttarpara speech, and I want to also kind of, piggyback on what Charanji was talking about, the significance of that writing, that essay on original thinking, Uttarpara speech, and there are several other writings like that which I feel should be mandatory reading for any Indian if that new India has to come about. Now, imagine what he's describing here. He's describing here that it was Sri Krishna, Yogi Yogeshwar himself, telling him about, not just telling him or explaining to him so that he would have an intellectual understanding, but pointing to him or making him realize the truths of the Karma Yoga to become a true instrument. That is something that is just marvelous. It gives you this goosebumps every time you read these lines. So again, we also know from Sri Aurobindo's own account that it was Sri Krishna himself who gave him the new Nirukta, which helped him decode the secret of the Veda. And then we know the profound significance of this, this particular connection between the two, because the kind of psychological, spiritual interpretation of the Veda that Sri Aurobindo has given the humanity is that which will become the basis of the future spiritual age of humanity. And he describes this beautifully at one place where he says, the Veda was the beginning of our spiritual knowledge. The Veda will remain its end. But it's the inner significance, the inner quest that the Vedic rishis were after. That will become, that is the end towards which the humanity is also moving. So now, but I want to go back to the experience of, my visit to this sacred place, the sacred Presidency ashram or Alipur ashram, those few minutes that these days you are allowed to spend at the, at that space. And I just want to say how one can still feel Sri Aurobindo's presence if one is open to him and surrendered to him. And it's about 10 or 12 minutes that they give you, but it's like a lifetime of precious memories of what his grace can make you experience there. And for me, it was, the cell, because it's this interchange of consciousness that was happening, this connection between Sri Krishna and Sri Aurobindo that was happening there. It becomes profoundly moving, overwhelming, elevating, calming, all at the same time. But the biggest, the most profound thing that one experiences is the silence. And in the middle of that silence, there is still a small little desire, at least I felt that, if my tears could just stop for a minute or so that my eyes could capture in their memory the entire physical space itself. But it's not easy to, at least for me, it wasn't easy to kind of just capture in my visual memory what that space was like. And then when they tell you, the police officer who is with you, when he tells you that your time is up and you need to walk back to the compound gate, it's that deep silence that accompanies you. So it's just, it's a real blessing to spend those 10, 12 minutes there. And you just come out and you wait for your taxi or whatever means of conveyance you have. Your heart is full. Whatever else happens, that just remains between you and Sri Aurobindo. So, but what I can also talk about is this mental realization that I have after having, kind of reflected on that experience, that
for me, it was like, whatever Sri Aurobindo is describing in his Uttarpara speech of what took place, the transformation that he went through in this realization of the truth of the Gita and in the realization of the truth of Sanatan Dharma with Sri Aurobindo as his guide, it solidifies, that experience there solidifies and makes you internalize the truth of Sri Aurobindo's own words, his own account. And of course, that's all because of divine grace, because of Mother's grace. As I said a little while ago, there are two comments or two lessons that I want to point out from this Uttarpara speech. The second one is about the second major transformation or realization that Sri Krishna blesses Sri Aurobindo with, which is the realization of that cosmic consciousness, of seeing Vasudeva, seeing Sri Krishna in everything and in every being. And as Sri Aurobindo says, in the tree outside his cell, to the bars of his door, his prison, his cell door, to the murderers, in the murderers and thieves, to the prosecutor and judge in the court. He talks about how he would put his head on that rough blanket that was given to him, and for him it was the arms of Sri Krishna. He describes that it was the arms of my friend and lover. So along with this cosmic consciousness also comes the truth of bhakti yoga. So karma yoga, bhakti yoga, cosmic consciousness, all of that. And before going to prison, we know he's already attained the silence of the mind. So as if it was like he was ready to be launched on to the next work. So Sri Krishna made sure that all that experiences happen within that 1 year. So now he is going to take up the truths of all the yogas of the past. And then he's also in that same prison cell. He has 15 days of continuous guidance by Swami Vivekananda, pointing him to the next step, to the next walk that he must take, the new path that that was waiting to be opened, the path that he was going to now walk steadily on this ladder of consciousness, ascending one plane after another, sometimes descending also to sort of integrate the lower into the higher, through his yogic occult work, also to root out the seeds of ignorance and falsehood from the ranges of inconscience and subconscious, all because he knew that if this earthly life was to be transformed into a divine life, the next step of that ranges of consciousness, the supramental consciousness, must be brought down in matter. So after this 1908, 1909 experience and his coming to Pondicherry, I'm skipping several years and taking us to 1926, the month of November 1926. And we know what profound Siddhi event takes place on November 24th. The mother also spoke of it as the day of victory. I'm quite tempted to share some of the details of the accounts by various disciples who were blessed to receive Sri Aurobindo's and Mother's blessings on that evening, but and what they saw, what they felt. But I want to, just in the interest of time, I'm going to skip all that and go to Sri Aurobindo's own comments about the significance of that particular Siddhi. And he's written several letters about this. So there is in one particular letter in to Nirodha, he writes what that Siddhi, the descent of Krishna, the descent of the overmind God meant for his yoga. He said, this is his exact words, 24th November 1926 is the day when Sri Krishna descended into the body. His descent means the descent of the overmind God, which will prepare the descent of the supermind. In another letter to another disciple, he clarifies a little bit more. He says 24th was the descent of Krishna into the physical. Krishna is not the supramental light. The descent of Krishna would mean the descent of the overmind Godhead, preparing the descent of the supermind and Ananda. Krishna is the Anandamaya. He supports the evolution through the overmind, leading it towards the Ananda.
So most of you all know enough about, the ranges and planes of consciousness that Sri Aurobindo and Mother have described between mind and supermind. And each of these planes having its own characteristic power, light, knowledge. The overmind, as we know, is the highest, one of the highest of these ranges, but below supermind. And so this overmind Godhead had to be descended, brought down into the physical before the next step, the supramental descent, was to become possible. This is why the significance, this is what the significance of this descent of Krishna is. In some ways, it sort of signified the fullness, culmination of his over-mental realization, Sri Aurobindo's over-mental realization. But there is something very interesting that Mother has pointed out in a conversation in 1961. You find this in Mother's agenda, August 2nd, 1961 conversation. And there she really helps us understand what was the true relevance of this Siddhi, not only for Sri Aurobindo. And he said for Sri Aurobindo, it was not even necessary, because left to himself, his yoga would have been long time done, but his yoga was for the earth. So this Siddhi was important for the creation, for the manifestation. So I want to read some lines from Mother's conversation. I will skip several parts, but only point out to the key essentials here. She says, this is what happened. Krishna consented to descend into Sri Aurobindo's body to be fixed there. And she emphasized the word fixed. She says there is a great difference between incarnating, being fixed in a body, and simply acting as an influence that comes and goes and moves about. The gods are always moving about, she says. But there is a difference between just coming occasionally and accepting to be permanently tied to a body, between a permanent influence and a permanent presence. So it's the permanent presence of Sri Krishna on earth that is the significant part here. So then Satprem asked, but in what sense did this realization mark a turning point in Sri Aurobindo's sadhana? And Mother said it very emphatically, no, the phenomenon was important for the creation. He himself was rather indifferent to it, but I did tell him about it. Time is short, so I'm going to skip about how Mother describes how he told Sri Aurobindo, what she saw. And she speaks about in the same conversation that she had often seen Krishna around Sri Aurobindo. But on this particular day, she goes and she tells Sri Aurobindo that, he's here, he's come into you. And, because she was working on this, creating this over mental creation to make each god descend into a being. So she was constantly in contact with them. And she told Krishna, because she was seeing him around Sri Aurobindo, she tells Krishna that you must be a part of a new creation on earth. You must incarnate. And he had said yes. And then, of course, on November 26th, that Siddhi happens. She says, I saw him with my own eyes join himself to Sri Aurobindo. These are her exact words. And then she goes to Sri Aurobindo's room and she tells him, here is what I have seen. And now she's recounting to Satprem. Sri Aurobindo's reply, yes, I know. Mother laughs. And then he goes on to tell her, that's fine. I have decided to retire to my room and now you will take charge of the people. You take charge. So, it's only through her words that we truly understand the subtle but very important difference about the relevance of this particular Siddhi. And then she goes on, and I'm skipping several lines to describe where she describes some more things. But then she sort of summarizes this, and this is what she says is, it was only a participation from Krishna. It made no difference for Sri Aurobindo personally. It was a formation from the past that accepted to participate in the present creation, nothing more. It was a descent of the Supreme from some time back, now consenting to participate
in the new manifestation. So the past coming together to work, with the present creation and opening the way for a new manifestation. This is the true significance of that particular siddhi. Now, just to bring our discussion to a little close here, I want to just mention that there are several letters of Sri Aurobindo himself where he has clearly talked about the complete identification of him and Sri Krishna. In fact, at one place in one letter to Dilip Kumar Roy, he refers to Krishna as his double. He tells him that the peace that you've been feeling for such a long time, it is because of the pressure that I am persistently putting in you, my force that is acting upon you. And then he says in his characteristic humorous way, I refuse to give the credit to my double, Krishna. Because Dilip Kumar Roy was a devotee of Sri Krishna. And there are several letters of his to him describing that how he cannot, how coming to Krishna is like coming to Sri Aurobindo. In one of the letters, he says, if you reach Krishna, you reach the divine. If you can give yourself to him, you give yourself to me. There is a particular conversation of the mother, a letter also to a sadhak, where she so clearly talks about how the work that is being done in the ashram is a continuation of Sri Krishna's work. Again, this was to a sadhak who was having a conflict between devotion towards Krishna and accepting the divinity of the mother. And mother wrote to him saying that the struggle in you between bhakti for Krishna and the sense of the divinity of the mother is quite unnecessary. For the two things are one and go perfectly together. It is he, that is Krishna, who has brought you to the mother, and it is by adoration to her, adoration of her, that you will reach him. It's by adoration of the mother you will reach Krishna. He's here in the ashram, and it is his work that is being done in this yoga. Amal Kiran has also talked about his conversation where Sri Aurobindo saying that it is Sri Krishna's work that we are continuing to do. Maybe in the discussion section time, if there are few minutes, I can elaborate upon at least 2-3 points in which we can understand how the work that Sri Aurobindo did is a continuation of Sri Krishna's work. But I want to conclude with one specific writing of Sri Aurobindo. And again, this is a letter to Dilip Kumar Roy, which I personally find is one of my favorite in terms of how Sri Aurobindo describes his identity, complete identity with Sri Krishna. And he writes, you can't expect me to argue about my own spiritual greatness in comparison with Krishna's. The question itself would be relevant only if there were two sectarian religions in opposition, Aurobindoism and Vaishnavism, each insisting on its own greatness. That is not the case. And now this is the part that is very interesting. And then what Krishna must I challenge? The Krishna of the Gita, who is the transcendent Godhead, Paramatma, Parabrahma, Purushottama, the cosmic deity, master of the universe, Vasudeva, who is all, the immanent in the heart of all creatures. Perfect, such beautiful description of Krishna he gives. Or the Godhead who was incarnate at Brindavan and Dwarka and Kurukshetra, and who was the guide of my yoga and with whom I realized identity. All that is not to me something philosophical or mental, but a matter of daily and hourly realization. Look at the choice of his words. A matter of daily and hourly realization and intimate to the stuff of my consciousness. I don't know if after this there is any other way we can speak of the identity of Sri Aurobindo and Sri Krishna. So I'll just stop here and thank you for patient listening. थैंक यू बेलू दी, आपका ये जो बातें था
ये हृदय को स्पर्श करने वाला था, हार्ट टचिंग था मेरे लिए, मैं बोल रही हूँ। बाकी लोगों से तो हमें पता चलेगा धीरे धीरे। Thank you.